Hello, myself Dr. Ansari Farzana W, Chemistry Department, J.A.T Senior College, Malegaon. Today we shall discuss about, welcome all of you. Today we shall discuss about the solvent extraction. TYBSc, semester 2nd, paper 4th, chapter 1st, solvent extraction. Most of the method of analysis involve separation of the component of the mixture, their purification if required, and their estimation. The main difference between the separation and purification is that in the process of purification, one starts with material composed or large amount of the one constituent and the small amount of the other constituent. In the process of purification, the small amount of the other constituents are removed to get the large constituent in the pure form. On the other hand, in the process of separation, one starts with material composed of the mixture of large quantities of the other constituents. In the process of separation, we get nearly all the constituents in the pure form. Following two types of the methods are generally used for the separation of the mixture of the constituents. First one, physical method. In such method, the advantages of the difference in physical properties of the constituents is taken. For example, properties like solubility, adsorption, etc. are considered. Whereas in second type, chemical method, in such method, the advantages of the difference in chemical properties of the constituents is taken. For example, property like precipitation, complex formation are considered. Principle of solvent extraction. Solvent extraction is one of the physical methods used for separation of the component of the mixture. It is based upon the principle that a solute can be distributed in certain ratio between two immiscible solvents, in such as benzene, carbon tetrachloride, chloroform, etc. The technique of solvent extraction is sometimes also called liquid extraction. During the solvent extraction method, solvent extraction is one of the separation method. Here we are in need of two immiscible solvent, and the solid which is extracted should be distributed between the two immiscible solvent. For example, water and benzene, water and carbon tetrachloride, water and chloroform. Therefore, two liquids are used. Therefore, this technique is also called as liquid extraction. Ionic compound in general are insoluble in organic non-polar solvent but dissolve in polar solvent, having high dielectric constant due to the solvation of the ion. In contrast, covalent compounds show preferential solubility in non-polar solvent. Therefore, the extraction of iron from its aqueous solution into an immiscible organic solvent can be done if the ion form an uncharged species. For example, chelated neutral complex or ion pair like H plus AuCl4, H plus FeCl4. This principle is used in solvent extraction. The technique of solvent extraction having the following features. It is a simple operation and easy to carry. Simple and easy to carry out. There is no need of sophisticated equipment or instrument. In many cases, separation may be effected by shaking in a separating funnel for a few minutes. It can be used in micro level as well as macro level. It is highly selective and convenient. It has the ability to separate minor constituent from the major constituent. It is a speedy technique.
This apparatus is used generally for solvent extraction. It is called as separatory funnel or separating funnel. Distribution coefficient. Here, solvent extraction is based upon the Nernst distribution law. Nernst distribution law states that when a solute distributes itself between two immiscible phases in contact and in equilibrium with each other, the ratio of concentrations of the substance in the two phases is constant at constant temperature. Provide the molecular state of the distributed solute is same in both phases. ये क्या बोल रहे हैं कि जब कोई सॉल्यूट को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द एक्वियस मीडियम, तो हम उसे शेक करेंगे विद द अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड दैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, जो यूज़ करें होगा फॉर एक्सट्रैक्टिंग द सॉल्यूट फ्रॉम द एक्वियस मीडियम, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाता है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट. और नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोलता है कि जब हम सॉल्यूट को दो इमिसिबल सॉल्वेंट के दरमियान रख कर शेक करते हैं, तो क्या होता है कि सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करता है कि एट इक्विलिब्रियम concentration of solute in the aqueous phase and concentration of the solute in the organic phase are same. That means we can say that concentration of solute in first phase divided by concentration of solute in second phase is equal to constant, and that constant is denoted with the help of letter Kd. And this Kd is called as distribution coefficient. Where S1 is the concentration of the solute in mole per liter in the liquid phase 1, whereas S2 is the concentration of solute in mole per liter in phase 2. For example, water. Kd is a constant and called as distribution coefficient or partition coefficient. The partition or distribution coefficient is independent upon the total concentration in either case. ये सिर्फ क्या बोलता है कि जब कोई सॉल्यूट को हम दो इमिसिबल सॉल्वेंट के दरमियान शेक करते हैं, तो सॉल्यूट अपने आप को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है दोनों फेजेस में कि इक्विलिब्रियम पर the ratio of concentration of the solute in the two phases remains constant, and that constant is called as distribution coefficient or partition coefficient. The law as it is states is not thermodynamically rigorous. That means it takes no account of activities of the various species. Hence, it is applicable only in dilute solution where the ratio of activities approaches unity. Safe distribution coefficient has following limitation. It can be used only when the temperature remains constant. Ratio of the solute between two immiscible solvent वो constant कब रहेगा? जब temperature remains constant. वो कांस्टेंट कब आएगा? जब सॉल्यूशन आर डायलूट. जब डायलूट सॉल्यूशन रहेगा तब कॉन्सेंट्रेशन हम उसका डायलूट सॉल्यूशन रहेगा तो वहाँ पर एसोसिएशन, डिसोसिएशन या पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, और जब वो नहीं होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट बिटवीन द टू इमिसिबल सॉल्वेंट रिमेन्स कांस्टेंट आएगा. द सॉल्वेंट आर इमिसिबल. ये कांस्टेंट कब आएगा? जब दोनों सॉल्वेंट, जिसमें एक्वियस मीडियम और ऑर्गेनिक मीडियम, दोनों सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल. The molecular state of solute remains the same in the two solvents. That means solute does not undergo dissociation, association and polymerization or interact with each other with the dissolved species. यानी concentration of solid between the two immiscible solvent, ये रेशो कांस्टेंट कब आएगा? जब उसकी मॉलिकुलर कंडीशन सेम रहेगी. मॉलिकुलर कंडीशन कब सेम आएगी? जब वो डायलूट होगा. जब डायलूट होगा तो वो कब मॉलिकुलर कंडीशन और सेम आएगी? जब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा. ये सारी कंडीशन रहेगी तभी S1/S2 इज इक्वल टू KD आएगा. नहीं तो फिर अगर पॉलीमराइजेशन होगा
तो S1/S2 इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं आएगा। ये लॉ सिर्फ अप्लीकेबल है कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कब, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा, कब, जब दो सॉल्वेंट इमिसिबल रहेगा, कब, जब उसकी मॉलिक्यूलर कंडीशन सेम रहेगी। Suppose that we are interested to know the exact concentration of the solid between two immiscible solvents along with their molecular behavior। यानी हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन, उसका अमाउंट जो है दोनों सॉल्वेंट में नहीं जानना है, बल्कि हमें ये भी जानना है कि वो सॉल्यूट डिसोशिएट हो रहा है कि एसोशिएट हो रहा है बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट, ये भी जानना है। तो हमें एक दूसरे रेशो की ज़रूरत होती है और वो रेशो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो देता है अमाउंट के साथ साथ उसकी मॉलिक्यूलर बिहेवियर, और डिस्ट्रीब्यूशन रेशो इज इक्वल टू टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसीज इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसीज इन एक्वियस फेज। मतलब क्या कि उसका टोटल कॉन्सेंट्रेशन अलॉन्ग विथ देयर बिहेवियर, दिस रेशो इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या बोलता है, सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉलिड बिटवीन द टू इमिसिबल सॉल्वेंट, मतलब अमाउंट ऑफ सॉलिड इन द ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉलिड इन एक्वियस फेज इज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन हमें अगर उसकी एक्टिविटी भी जानना है, उसका बिहेवियर भी जानना है, तो वी आर इन नीड ऑफ सम different term, and that term is called as distribution ratio। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या देता है कि हमें अमाउंट के साथ साथ उसका मॉलिकुलर बिहेवियर भी देता है। यू विल बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। सपोज दैट बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या है, लेट अस कंसीडर एक्सट्रैक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम द एक्वियस सॉल्यूशन इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर। सपोज करते हैं कि हम बेंजोइक एसिड एक्वियस सॉल्यूशन में हमने आपको डिज़ोल्व करके दिया और कहा कि इसे एक्सट्रैक्ट करो, उसे सेपरेट करो एक्वियस मीडियम से। तो हम ईथर जो है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक फेज यूज़ करेंगे, और ये ईथर और वाटर इमिसिबल है। जब हम सेपरेटिंग फनेन जो देखा हमने, सेपरेटिंग फनेन में क्या लेना है, एक्वियस मीडियम में बेंजोइक एसिड जो डिज़ोल्व है वो और ईथर वो डालकर शेक करेंगे। शेक करने के बाद देखेंगे कि बेंजोइक एसिड दोनों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट अगर लिखना है तो यू कैन राइट इट एज KD इज इक्वल टू HBZ अपॉन HBZ। तो HBZ इज सपोज दैट द एब्रीवेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो इज इक्वल टू क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या बोलता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन द ईथर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन एक्वियस फेज। बट सपोज दैट इन एक्वियस मीडियम बेंजोइक एसिड अंडरगो पार्शियल आयोनाइजेशन। तो इसका आयोनाइजेशन किस तरह से होगा, HBZ आयोनाइजेस इनटू H+ and BZ माइनस। The ionization constant of benzoic acid in medium can be written as K is equal to concentration of the H+ ion in aqueous medium divided by concentration of BZ minus in aqueous medium divided by concentration of HBZ. So dissociation constant of acid is equal to the concentration of the product divided by concentration of the reactant। प्रोडक्ट क्या है हमारा H+ और BZ माइनस, और रिएक्टेंट क्या है हमारा HBZ एक्वियस मीडियम। द सफिक्स A इंडिकेट द एक्वियस मीडियम। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशो किस तरह से हम लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशो देगा उसका टोटल कॉन्सेंट्रेशन with their behavior। So distribution ratio can be written as concentration of ether medium में बेंजोइक एसिड जैसा कि वैसा है, लेकिन हमने क्या सपोज किया कि एक्वियस मीडियम में वो स्लाइटली डिसोशिएट हुआ है। तो डिसोशिएट होकर क्या दे रहा है वो H+ और BZ माइनस। तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे इसका कि अनडिसोशिएटेड फॉर्म प्लस डिसोशिएटेड फॉर्म। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज इक्वल टू HBZ ईथर डिवाइडेड बाय HBZ एक्वियस प्लस BZ minus, where A is denoted by the suffix E and suffix A represent ether and aqueous medium respectively।
Benzoic acid is present in the undissociated form as HBZ and dissociated form as BZ minus. So the total concentration of benzoic acid in all form and not of the H plus in aqueous medium is written is in the denominator. Now consider the relationship between the distribution coefficient and distribution ratio. Under ideal condition, that means when there is no association or dissociation, जब डिसोशिएशन और एसोसिएशन सॉल्यूट का कोई भी मीडियम में नहीं होगा, उस वक्त आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो. उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो. बट सपोज दैट हियर द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है वो क्या लिखा है अभी हमने, डी इज इक्वल टू एच बी जेड ईथर अपॉन एच बी जेड एक्वियस प्लस बी जेड माइनस एक्वियस. और के डी इज इक्वल टू क्या है कि बेंजोइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ईथर डिवाइडेड बाय बेंजोइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वियस मीडियम. अब ये इक्वेशन जो है के डी की वो स्लाइटली रीअरेंज करेंगे. हम क्या करेंगे, एच बी जेड ए जो है नीचे का वो उल्टे हाथ की तरफ लेकर आएंगे. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच बी जेड ईथर इज इक्वल टू के डी एच बी जेड एक्वियस. के ए हमने क्या देखा था, के इज इक्वल टू एच प्लस आयन इंटू बी जेड माइनस आयन डिवाइडेड बाई एच बी जेड. ये इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा स्लाइटली रीअरेंज करेंगे. तो ये रीअरेंज करने पर क्या हो जाती है, एच बी जेड माइनस एक्वियस. बी जेड एच बी जेड ये नीचे का जो है वो के ए की तरफ लेकर आएंगे. तो ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, एच प्लस आयन ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी जेड माइनस एक्वियस इज इक्वल टू के ए एच बी जेड एक्वियस अपॉन एच प्लस एक्वियस. अब ये दोनों इक्वेशन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच बी जेड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जेड माइनस, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इन दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर आपकी, D इज इक्वल टू किसकी जगह, ईथर. एच बी जेड ईथर क्या है यहाँ पर, एच बी जेड ईथर. ये इक्वेशन में डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में हम सब्सटीट्यूट करेंगे एच बी जेड ईथर का वैल्यू और बी जेड माइनस की वैल्यू. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, D इज इक्वल टू के डी एच बी जेड एक्वियस डिवाइडेड बाई एच बी जेड के ए एच बी जेड एच प्लस एक्वियस. एच बी जेड कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद देखेंगे उसको कैंसल होगा ऊपर का और नीचे का. तो ये इक्वेशन क्या आएगी, D इज इक्वल टू के डी एच बी जेड कैंसल हो रहा है कॉमन निकालने के बाद, यहाँ पर कैंसल हुआ तो यहाँ पर 1 आएगा. तो के डी अपॉन A1 plus Ka upon H plus ion concentration. Thus, this is the relation between distribution coefficient and the ionization constant of weak acid and H plus ion or pH of the aqueous solution. If H plus ion is greater than K, D is nearly equal to Kd. If Kd is large, the benzoic acid will be extracted in ether layer to a large extent. Thank you for watching me.